शुरू करेंगे। अच्छा, आते हैं, आ रहे हैं। Yes. हरे कृष्णा। तो आज हम यहाँ पे परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज के बारे में बताना चाहेंगे 2 मिनट के लिए। भक्ति विज्ञान महाराज 1956 में उनका जन्म हुआ एंड फिर वो वे 1980 में कॉन्शियसनेस के टच में आए और उसके बाद से फिर महाराज ने डेडिकेट किया अपना लाइफ। और महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल हैं, सन्यासी डिसाइपल हैं। और जी महाराज पिछले 20 सालों से रशिया में प्रचार कर रहे हैं और आप जानते हैं रशिया में प्रचार करना आसान Сюда поставь лучше. और Окей. महाराज ने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड है। महाराज एक्चुअली केमिकल साइंस स्कॉलर है, पीएचडी किया हुआ है महाराज ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है रशियन लैंग्वेज में, भगवद गीता पर, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड द फिलॉसफी ऑफ द रिलीजियस सिस्टम्स एंड द हीलिंग नेचर ऑफ द प्रेयर। सो हमारे यह सौभाग्य है कि महाराज मायापुर आकर हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने अपना समय दिया है। तो आज हम अपने हृदय से और काफ़ी ध्यानपूर्वक महाराज का लेक्चर सुनने का प्रयास करेंगे। सबसे निवेदन है कि कृपया वे अपने मोबाइल को साइलेंट पे कर लीजिए और जो भी आजू बाजू में आते हैं नए बाद में लेट, उन्हें भी रिक्वेस्ट करेंगे कि साइलेंट पे करेंगे मोबाइल। एंड लास्ट में अगर कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो प्लीज़ आप लोग ओपनली महाराज से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। क्या आप अनुवाद करेंगे? जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, वल्लभ, जय यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन,
Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Labha Jaya Girivaradhari Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Madhava, Jayo Kunjo Bihari, Jayo Radha Madhava, Jayo Radha Madhava, Jayo Kunjo Bihari, Jayo Radha Madhava, Jayo Radha Madhava, Jayo Kunjo Bihari. Jayo Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Sri Radhe, Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Sri Radhe, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Sri Radhe, Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Sri Radhe, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Jagana, Jaya Baladev, Jaya Jagana, Jaya Subhadra, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. मेरे पास है. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Deve Tato Jaya Mudirayet
So I will read the verse number 3 from the 4th chapter of Bhagavad Gita, entitled Jnana Yoga, or Transcendental Knowledge. Sa eva ayam maya te adya yogaha proktaha puratanaha bhaktaha asi me sakha cha iti rahasyam hi etat uttamam saevayam mayate dya saevayam mayate dya yogah proktah puratanaha yogah proktah puratanaha bhaktosi me sakha cheti bhaktosi me sakha cheti rahasyam hyetatuttamam rahasyam hyetatuttamam saevayam mayate dhyam yogah proktah puratanaha bhaktosi me sakha cheti rahasyam hyetatuttamam. Somebody else? Saevayam mayate dya Saevayam mayate dya yoga prokta puratanaha yoga prokta puratanaha bhaktosi me sakha cheti bhaktosi me sakha cheti rahasyam hyetatuttamam Saevayam mayate dya yoga prokta puratanaha bhaktosi me sakha cheti rahasyam hyetatuttamam. Saevayam mayate dya yoga prokta puratanaha bhaktosi me sakha cheti rahasyam etatuttamam. Saevayam mayate dya yoga prokta puratanaha bhaktosi me sakha cheti rahasyam hyetatuttamam. Uttamam. Saha, the same. You will read Hindi? Okay. Eva, निश्चय ही ayam, यह maya, मेरे द्वारा te, तुमसे adya, आज yogaha, योग विद्या proktaha, कही गई puratanaha, अत्यंत प्राचीन bhaktaha, भक्त asi, हो मैं मेरे sakha, मित्र cha, भी iti, अतः
Rahasyam रहस्य hi निश्चय ही etat यह uttamam. दिव्य। So I will read the translation and purport you can read straight. That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science. Yeah, no read translation also. अनुवाद एवं तात्पर्य। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तात्पर्य: मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मन घड़त बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। Srila Prabhupada ki jai. Saevayam maya tedya yogah praktah puratanaha bhaktosi me sakacheti rahasyam hetatuttamam. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Yantah pravishya mama vachimam prasuptam sanjeevayate kila shakti darasvadhamna anyamsya hasta charana shravana tvagadim pranannamo bhagavate purushaya tubhyam. Svasyastu vishvasya kalah prasidatam Dhyayantu bhutani shivam mithodhiya Manascha badram bhajata tadokshaje Aveshyatam no matirapyahaituki. आज मैं बहुत खुशी हूँ इस अवसर से, लेकिन मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं अंग्रेजी में बोलूँगा।
Um, I have to switch English button in my mind. Okay. In the previous verse, Sri Krishna said that this yoga, this science of yoga, evam parampara praptam imam rajarsha viduh sakalineha mahata yoga nashtah parantapa. This yoga was broken by the influence of the great time. इसके पूर्व के श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो योग की परंपरा है यह टूट गई थी काल के प्रभाव से. And Srila Prabhupada very aptly translates the word yoga in the word by word and in the translation as the science of God. बखूबी श्रील प्रभुपाद इस शब्द योगा का अनुवाद करते हैं Vigyan, Yoga Vidya, Bhagavan ki Vidya, yeah. The supreme science, Param Vigyan. परम विज्ञान. And in this purport and in translation, again, he translates this phrase. He says that this ancient science of relationship with the Supreme today is told by me, and then he again repeats the supreme science of Bhagavad Gita. तो इस श्लोक और तात्पर्य में भी पुनः श्रील प्रभुपाद जी इसी बात को दोहराते हैं कि ये परम गुह्य ज्ञान है और परम विज्ञान है भगवत भक्ति का. This is one of the most important features of Srila Prabhupada's preaching. ये श्रील प्रभुपाद जी के प्रचार आंदोलन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है. He was preaching Krishna consciousness as the science. श्रील प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे कृष्ण भावनामृत का एक विज्ञान के रूप में. And the science has universal appeal. और जो ये विज्ञान है इसका सांसारिक में जनहित जारी में इसका उपयोग है. Science is not divided according to our nationality, according to our citizenship, according to any external things. जो विज्ञान होता है वे ये बाह्य वस्तुएं जैसे कि धर्म जात पाति के हिसाब से विभाजित नहीं होते. There is no American physics, German physics, Russian physics. There is only physics. फिजिक्स केवल एकमात्र फिजिक्स है. अमेरिकन फिजिक्स है, जर्मन फिजिक्स ऐसे नहीं है. So, why? Because science is universal. Science is speaking about universal principles. क्योंकि ये जग जाहिर तत्व है. ये कोई एक प्रकार एक दिशा से ही नहीं है. इसीलिए And these universal principles, they are true in any country and at any time. It's supposed to be true at any time. तो ये आदर्श रूप से ये जो जग जाहिर तत्व है ये हर समय सत्य होता है. Therefore, there is no division. इसीलिए कोई इसका विभाजन नहीं है. And therefore, Srila Prabhupada again and again stressed that Krishna consciousness is not a religion, because religion is something different. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं कि ये कृष्ण भावनामृत एक धर्म नहीं है केवल, क्योंकि धर्म कुछ और है. Dharma is a good word. Religion is not such a good word. But nevertheless, Srila Prabhupada even जैसे प्रभु बता रहे धर्म तो बहुत अच्छा शब्द है संस्कृत में या हिंदी में, लेकिन यदि केवल विश्वास की बात करें तो वो इतना अच्छा अनुवाद अच्छा शब्द नहीं है इस संदर्भ में. Because religion is a part of my ego. क्योंकि जो ये विश्वास है वो मेरे अहम का हिस्सा है, अहंकार. Yes. You know, I have religious affiliation, I have some, country affiliation, some other affiliations. It's all upadhi, it's all external.
ये सब उपाधियां, ये सब भारी बातें हैं. And therefore, Srila Prabhupada said that you can change your religion. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आप अपना जो मूल विश्वास है उसे आप परिवर्तित कर सकते हैं. He says this very clearly in the introduction to Bhagavad Gita. भगवद गीता के प्रारंभिक Bhumika. इंट्रोडक्शन भूमिका में श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताते हैं इस बात को. And because religion is a part of ego, of ahankar, of false identity, it becomes the source of quarrel between people. तो इसीलिए क्योंकि ये बाहरी बातों पे अगर है निर्भर, जो विश्वास की बात कर रहे हैं, तो ये संघर्ष या झगड़े का कारण बन जाता है. Whenever ego is involved, there is always will be a clash. जहाँ भी अहम जुड़े या टकराए, तो वहाँ पे झगड़ा होगा. If there is some tinge of ego, there will be always some sort of quarrel. किंचन मात्र भी यदि अहंकार रहा, तो निश्चय ही वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा. Because ego means I want to be the first, I want to be the most important. क्योंकि अहंकार मतलब मैं सबसे प्रथम होना चाहता हूँ, सबसे अहम मेरा स्थान हो. And it means that whatever I identify myself also has to be the best. इसीलिए जो कुछ भी मेरी मूल धारणाएं हैं, वो भी सबसे उत्तम होनी चाहिए. My country is the best. मेरा देश सबसे महान है. And we are the good people, everyone else is evil. और हम सब अच्छे सज्जन पुरुष हैं, बाकी सब दुराचारी हैं. I was speaking with some American devotees, and Americans said to me, we always thought we are good guys and you or Russians are bad guys. And I said, we thought the same. We are good guys and you are bad guys. महाराज जी कह रहे हैं कि एक बार एक अमेरिकी नागरिक से जब बात हुई, तो वो उनसे कह रहे थे कि आप ये हमेशा सोचते हैं ये हम अच्छे हैं और आपको लगता है कि आप अच्छे हैं, लेकिन महाराज ने कहा दोनों तरफ से ऐसी ही बात है. It's all ego play, ego game. ये सब अहंकार के स्तर पे ही आदान प्रदान होता है. And because our religious affiliation becomes also part of our ego, it becomes the source of religious wars, religious quarrels, all kinds of unpleasant things. क्योंकि हमारी धार्मिक पहचान भी यदि क्योंकि वो अहम के जड़ पे या बुनियाद पे होती है, इसीलिए इस बात को लेके धर्म के नाम पे भी झगड़े या लड़ाइयाँ होती हैं. My religion is the best. क्योंकि हम मानते हैं मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है. Why it's सबसे श्रेष्ठ है? Because it's mine. That's the only reason. क्यों सबसे श्रेष्ठ है? क्योंकि ये मेरा धर्म है, इसलिए. And therefore Srila Prabhupada very carefully was avoiding this sort of connotations while presenting Krishna consciousness. इसीलिए बड़े ही कुशलतापूर्वक श्रील प्रभुपाद जी ऐसे संबोधन और संभाषण को उपयोग में नहीं लाते थे. Again and again and again he was stressing this, that Krishna consciousness is universal. It has nothing to do with our hankar or our body or our any other upadhis which we have. इसलिए वारंवार पुनः श्रील प्रभुपाद जी इस बात पे जोर देते थे कि कृष्ण भावना अमृत सार्वभौमिक बात है, ये अहम के बुनियाद पे नहीं है. And that's why his mission was so successful. और इसीलिए उनका ये प्रसार का आंदोलन इतना यशस्वी हुआ. He could explain this universal principles to anyone, and people would accept this without any resistance. श्रील प्रभुपाद जी ये सार्वभौमिक तत्व सबको समझा पाते थे और सब ग्रहण कर पाते थे. And he also said in the first mission of ISKCON, the first purpose of ISKCON, which is the most important purpose, is that Krishna consciousness movement is there to eliminate all the quarrels which are there in the world and bring people together. इसलिए ISKCON के जो 7 मुख्य प्रयोजन है, उसमें से पहला ये है कि कृष्ण भावना अमृत To bring people together, to eliminate all kinds of quarrels between people. सबको एक साथ एकता से जोड़ना और झगड़े द्वंद्वों से दूर करना.
This is very much the spirit of Vedic culture. यही वैदिक सभ्यता का मूल है. We all know that this, on the Parliament of India, there is this Vasudhaiva Kutumbakam phrase from Hitopadesh. हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में हितोपदेश से ये लिया हुआ मंत्र है कि वासुदेव कुटुंबकम लिखा है. The whole world is one family. पूरा विश्व एक परिवार है. And this is the greatness of the Vedas. And the very word Veda means science. यही तो वेदों की महानता है, और जो वेद शब्द भी है उसका अर्थ ही है विज्ञान. Because Veda means knowledge. Veda doesn't mean religious book. क्योंकि वेद का अर्थ है ज्ञान. वेद एक धार्मिक पुस्तक नहीं है. From vidhatu. Vidhatu means to know, ज्ञान. वेद शब्द आता है विद धातु से संस्कृत में, जिसका अर्थ है ज्ञान. And therefore, this is very important idea which Prabhupada invested into his teachings. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो बात निविष्ट की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. And therefore, so many people who were atheists accepted this. इसीलिए जो इतने सारे नास्तिक जो लोग हैं, तो वो भी स्वीकार कर सके इसे खुले रूप से. Yeah, वो भी स्वीकार कर सके, कोई बात नहीं है. कोई समस्या नहीं है. कारण यह है कि anyway, I'll speak in English. The reason is that, Srila Prabhupada presented Bhagavad Gita in a very rational way, logical way. क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही बुद्धिमानी से कृष्ण भावनामृत का प्रस्तुति की, इसीलिए वे यशस्वी रहे. तार्किक रीति से, तार्किक रीति से के द्वारा. तर्क विचार. There are so many people now who are preaching Vedic culture in the West. आज की तारीख में विदेशों में इतने सारे लोग हैं वैदिक ज्ञान प्रचार करने के लिए. But not many people can really do what Srila Prabhupada did. लेकिन बहुत ऐसे लोग नहीं हैं जो वे कार्य कर सकते हैं जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने किया. After Srila Prabhupada went to America, so many swamis after him are going to America. श्रील प्रभुपाद जी के अमेरिका जाने के पश्चात बहुत सारे अन्य स्वामी जाने लगे वहाँ. But mostly they are preaching to Indians who are there in the West. लेकिन मुख्यतः वे भारतीयों को ही प्रचार करते हैं जो पाश्चात्य देशों में हैं. I once was speaking with Mukhya Swami of Swami Narayan Group in London. एक बार महाराज जी वार्तालाप कर रहे थे लंदन में स्वामी नारायण संस्था के एक मुख्य प्रमुख स्वामी से. Pramukh Swami. Yeah, there was Pramukh Swami was the name of their leader, but anyway. So they had beautiful temple there in Nisdan, right? Nisdan temple, Swami Narayan temple in Nisdan in London. वहाँ पे उस स्थान पे बहुत ही सुंदर मंदिर था स्वामी नारायण का. And I asked him, do you have some English people who are coming who are part of your group? महाराज जी ने उन्हें पूछा कि क्या आपके यहाँ पे अंग्रेज भी आते हैं आपके इस संस्थान के सदस्यों के रूप में. And he very proudly says, yes. और उन्होंने बड़े ही अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ. 1 or 2. एक या दो के. So that's basically what it is. They're not even trying to reach to the hearts of people who have different upadhis, different ego. वे ये प्रयास नहीं कर रहे हैं कि अन्य प्रकार की जिनकी प्रवृत्तियां हैं, उपाधियां हैं, उन तक भी पहुंचा जाए. But Srila Prabhupada
thought that it is a humiliation of the Vedic culture to present it in this very specific way, not in a very universal way. श्रील प्रभुपाद जी ने लेकिन कहा कि इस प्रकार से प्रस्तुति करना वैदिक सभ्यता का उसको घटाना है, क्योंकि सार्वभौमिक रूप से भी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा हो तो। And therefore we have to very clearly understand what is the difference in approach, because now when Krishna consciousness Andolan, the movement of Srila Prabhupada, has become so big, we kind of again turning Krishna consciousness into quote-unquote religion. इसीलिए क्योंकि आज किस तारीख में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का स्तर इतना बड़ा और ऊंचा हो गया है, तो हमें बहुत ही ध्यान देना है सावधानी पूर्वक, क्योंकि दोबारा से कृष्ण भावनामृत की प्रस्तुति धार्मिक रूप से न हो जाए केवल. We do have religious angle of our practice. There is no doubt about it. We dress a certain way, we have tilak, we have all these external things. But again, all these things, they're scientific by nature. हालांकि निस्संदेह हमारे साधना में धर्म के दृष्टिकोण से भी अंग है, जैसे तिलक लगाना कोई पद्धति में, विशेष पद्धति में, कंठीमाला और वेशभूषा इत्यादि, लेकिन इसके अतिरिक्त भी काफी कुछ है. Why do we dress this sort of clothes? हम इसी प्रकार के वस्त्र क्यों पहनते हैं? It's called dhoti, right? इसे धोती कहते हैं. And dhoti means pure, it's clean. धोती मतलब शुद्ध, पवित्र. Because it's very easy to wash it. क्योंकि इसे धोना It's just a piece of cloth. बड़ा आसान है. You know, you try to wash your jeans every day. It's not going to work. It's very difficult. जीन्स रोजाना हम धोने का प्रयास करें तो इतना आसान नहीं है. Jeans are not clean. They're not dirty. पवित्र नहीं है. They're jeans. वो जीन्स They're meant to be washed once every 3 months. जीन्स धोने योग्य है केवल एक बार 3 माह में. So, what I mean to say is that even though we look like something who belongs to a very specific kind of faith, but actually this is all scientific. This has very important meaning behind it. तो कहने का अर्थ ये है कि भले ही बाहरी रूप से ऐसे प्रदर्शित होता हो कि हम कोई एक आस्था या धर्म या विश्वास के विभाजन में आते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये जो मार्ग है ये बड़ा ही विज्ञान का मार्ग है. But we ourselves have to very clearly understand that this is a great science, as Prabhupada says. इसलिए हमें खुद को बहुत ही अच्छी तरह से समझाना होगा कि ये भक्ति का मार्ग जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है ये एक विज्ञान है. And here in this particular verse, Shri Krishna says that Arjun, I will explain to you the science because you are qualified to receive it. और इस विशेष श्लोक जो आज का श्लोक है, इसमें श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें ये जो योग का विज्ञान है ये मैं तुम्हें प्रदान करूंगा क्योंकि तुम इसके योग्य हो, काबिल हो. Bhaktosi me sakacheti, you are my bhakta and you are my friend. क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो. Again, this is a very specific point. Shri Krishna is speaking here about the qualification to receive the science. इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उनकी योग्यता का विशेष कारण क्या है. For example, if we are trying to become a doctor, we have to prove that we have to prove our yogyata, we have to prove our qualification, our adhikar. उदाहरण के तौर पे यदि हमें डॉक्टर बनना हो तो हमें अपना पद्धति से प्रामाणिक रूप से अधिकार स्पष्ट
जताना होगा डॉक्टर बनने के लिए। To understand the medical science, we have to fit certain qualifications. We have to have certain qualifications. इसीलिए जो औषधि चिकित्सा है, इसे समझने के लिए हमें उस योग्यता की श्रेणी में आना होगा। Of course, now I will say something not very politically correct. Now in India there is all this quotes for, Harijans, for untouchable people to become this special quota for their education. I once met, I was in South in Kerala, and there was one man who was working in a beach. How you call these people who are there to save drowning people? Lifeguards. He was working as a lifeguard. एक बार महाराज जी कौन से स्थान पे? केरला में, केरल में थे, भारत में, और वहाँ पे समुद्र के किनारे जो डूबने से बचाते हैं, वे उनसे बात कर रहे थे, उनको उन्होंने देखा। And I started speaking with him this and that, and I found out that he is a philosopher by education. He has university education as a philosopher. तो वार्तालाप में महाराज जी को पता चला कि वे व्यक्ति जो थे वे दार्शनिक डिग्री प्राप्त कर चुके थे। Yeah, he got this quota to become lifeguard on a beach. ये जो उन्हें ये नौकरी मिली थी वो एक विशेष कोटा के अंतर्गत मिली। So what I mean to say is that to understand any science, you have to have certain very precise qualification. तो इसीलिए कोई भी विज्ञान हमें अच्छे से समझने के लिए उसकी योग्यता होना बड़ा आवश्यक है। And here Krishna very clearly delineates, this is the qualification which you have to understand the science. Otherwise, you will not be able to understand it. You will not be able to really deal with it. इसीलिए श्री कृष्ण बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाते हैं श्लोक में कि ये विज्ञान समझने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। And Srila Prabhupada in the purport, he explains that those people who are envious of Krishna, they will never understand Bhagavad Gita. और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि जो लोग ईर्ष्या रखते हैं श्री कृष्ण से, वे कभी भी नहीं समझ पाएंगे इस विज्ञान को। He clearly says that you have to be non-envious means that you're my friend, means you don't have asuya towards me. निर्मत्सर होना होगा, आप मेरे भक्त हैं, मतलब आपकी मेरे प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है। And Srila Prabhupada says that all these people, they may write very learned scholarly commentaries on Bhagavad Gita, only misleading other people. इसीलिए भौतिक दृष्टि से बड़े ही विद्वता से भी यदि भगवद गीता का ये प्रचार प्रस्तुत किया जाए ग्रंथ के रूप में, तो भी वो सही नहीं होगा। So the qualification to understand this science is the purity of the heart. इसीलिए योग्यता क्या है? ये ज्ञान विज्ञान समझने के लिए हृदय की शुद्धता। Shuddhata, yes, and there are two qualifications. Your das, you are my bhakta, it means that you have the desire to serve, you're humble. काबिलियत या योग्यता जो है यहाँ पे दो प्रकार की है। एक दासत्व या दास होना, यानी आप मेरे भक्त हो, आप विनम्र रूप से मेरी सेवा के अधीन हो। So these two qualifications, the humility and non-enviousness, is very much required to understand this science. तो विनम्रता और निर्मत्सरता यानी ईर्ष्या न होना। Yes. ईर्ष्या रहित। If we try to understand this science without having these qualifications, vinamrita and nirmatsarata, if these two qualifications are not there, then we may study the whole Bhagavad Gita by heart, we may know it, we may teach other people, but there will be no result, there will be no change of the heart in other people, and there will be no change of our heart. इसीलिए यदि इन दो योग्यताएं विनम्रता और निर्मत्सरता यदि ना हो और हम पूरी भगवद गीता कंठस्थ भी कर लें, पढ़ लें, समझा लें, तो भी उसका वास्तविक रूप में कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा हृदय परिवर्तित नहीं होगा स्वयं का। दूसरे के हृदय परिवर्तन की तो क्या ही बात करें।
Srila Prabhupada used to say that if you have a snake and the snake has some jewel on her head, this jewel doesn't make this snake less poisonous. श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि यदि कोई सर्प हो और उनके मस्तक पे मणि हो, चमकती हुई मणि, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सांप डसेगा नहीं या उसमें जहर नहीं होगा। On the contrary, the snake becomes more dangerous. इसके विपरीत वास्तविक रूप में वह सर्प बड़ा ही ज़्यादा विषैला हो जाएगा। So if we have this snake-like nature and we know this jewel-like Bhagavad Gita, we become more dangerous than the normal snakes. इसीलिए ऐसे व्यक्ति के पास यदि सर्प जैसा ईर्ष्यालु स्वभाव हो और भगवद गीता जैसा मणि भी हो, तो वो बड़ा ही खतरनाक साबित होगा। So the main point to understand this science, we have to have certain qualities within our heart. The first and foremost is humility and non-enviousness to really be able to understand the science of Bhagavad Gita. इसीलिए मुख्य बातों में से जो मुख्य गुण होने चाहिए हमारे हृदय में योग्यता के लिए, उसमें से ये दो गुण बड़े आवश्यक हैं, निर्मत्सरता और विनम्रता। If we don't have these two qualities, then we study Bhagavad Gita and we become even more proud by studying Bhagavad Gita. Bhagavad Gita will become the cause for inflating our ego. इसीलिए ये दो गुण यदि हम में न हो और हम भगवद गीता पढ़ें, तो हमें और भी अहंकार हो जाएगा। भगवद गीता पढ़ने का ये कारण हो जाएगा हमारा अहंकार बढ़ने के लिए। And by inflating our ego by knowledge of Bhagavad Gita, we will commit more offenses. और इस प्रकार यदि हमारा जो मिथ्या अहंकार है ये जब बढ़ जाएगा और भी, तो हम और भी अपराध करेंगे भगवद गीता के इस ज्ञान के नाम पर। Look at me, how knowledgeable I am. ऐसी धारणा आ जाएगी कि देखिए मुझे कितना ज्ञान है। I have Bhakti Shastri degree. मेरे पास भक्ति शास्त्री डिग्री है। Of course, nowadays everyone has Bhakti Shastri degree. There is no one who don't have Bhakti Shastri degree. We produced more Bhakti Shastris than anyone else in the history of humanity. Anyway, so again, what I want to say is that I want to elucidate one more characteristics of the science which is opposing the religion. एक और दृष्टिकोण से महाराज जी प्रस्तुत करना चाहते हैं कि ये जो धार्मिक एक प्रस्तुति हुई और एक विज्ञान के रूप से। When people join a religion, they make a choice, and it's a very serious choice. जब कोई भौतिक धर्म को लोग अपनाते हैं, तो लोग चयन करते हैं और एक और विशेष रूप से चयन करते हैं। They may think, sometimes they don't think, they just do it because of the parampara, because of their, of their tradition, of their, affiliation. But in any case, they join certain religion, and from then on, they consider themselves Hindu, Christian, Muslim, or whatever. तो अपनी सभ्यता के कारण या कोई और कारण से जब लोग किसी भी आस्तिक या भौतिक धर्म को अपनाते हैं, तो फिर वो उसमें अपने आप को इस प्रकार से पहचानते हैं कि हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ इत्यादि। So they do this one-time choice. तो वो एक बार ये चयन कर लेते हैं। But when we're talking about the science, we understand that the choice which I do every day. I'm making my choice every day. लेकिन जब हम विज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो ये चयन हमें रोजाना करना होता है। Do I really, sometimes, Prabhupada, somebody said to Prabhupada, I'm a Vaishnava. Srila Prabhupada said, no, you're not Vaishnava. Vaishnava is too high. एक
एक बार किसी व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद से कहा था कि मैं वैष्णव हूँ, तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, आप वैष्णव नहीं हैं, क्योंकि वैष्णव का स्थान तो बहुत ऊंचा होता है. You know, when we're treating Krishna consciousness as a science, we have to always ask ourselves, do I really meet the mark? Do I really follow this properly? Did I live this day as a Vaishnav, or I lived it as a Gnostic person, as an atheist? इसलिए जब हम विज्ञान के दृष्टिकोण से कृष्ण भावनामृत को देखते हैं, तो हमें रोजाना अपने आप में ये देखना है गहराई से कि क्या आज का जीवन जो मैंने जिया वो वास्तविक रूप में वैष्णव भक्त के रूप से जिया या एक नास्तिक के रूप से. Do I really formally belong to Krishna consciousness, or I really conscious of Krishna, or I really understand that Krishna is there within my heart and he watches everything which I think, everything which I speak, and everything which I do? क्या हम केवल औपचारिकता के रूप में ये मान लेते हैं कि हम कृष्ण भावनामृत हैं, कृष्ण भावना भावित हो चुके हैं, या हम वास्तविक रूप से सच्चाई से हम ये निरीक्षण करते हैं अपने भीतर कि सच में क्या मैं कृष्ण भावना भावित हुआ हूँ, क्या मेरे हृदय में ये महसूस कर रहा हूँ कि श्री कृष्ण मेरे हृदय में है और वो मुझे सुन रहे हैं, मेरे हर कार्य को देख रहे हैं, और उस प्रकार से मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूँ. यह बहुत महत्वपूर्ण बात है. रोज प्रतिदिन हम निरीक्षण करना चाहिए. And another point which is also very important and which is also very much different from the religious approach, which distinguishes religious approach from the scientific approach, is the understanding who is responsible for what will be happening with me. और इसके अतिरिक्त विज्ञान के दृष्टिकोण से अतिरिक्त एक और दृष्टिकोण है जिसमें हमें ये विचार करना होगा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसका उत्तरदायी कौन होगा, उसके जिम्मेदार कौन होगा. When I have religious attitude, I agree to follow certain rules of a particular religion. जब मैं आस्था के रूप से कोई धर्म को अपनाता हूँ तो फिर उस मार्ग के कुछ नियम अपनाने होंगे. But I will follow only the minimum which is required for me to still be considered as a part of this religion. इसीलिए लेकिन उसमें फिर मैं कम से कम ही नियमों का पालन करूँगा अपने जीवन में न्यूनतम रूप से कि ताकि मैं इस आस्तिक मार्ग में मैं जुड़ा रहूँ. Sometimes when people take initiation, they give the vow. कभी-कभी जब लोग दीक्षा लेते हैं तो फिर वे प्रतिज्ञा करते हैं. And they say that, I give the vow that from now on I will chant 16 rounds every day. और वे कहते हैं कि आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं रोज 16 मालाएं जप करूँगा. And I always ask when they say this, and if you chant 17 rounds, you will break your vow? और मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि यदि आपने 17 मालाएं जप कर दी तो क्या आप अपने इस प्रण को तोड़ेंगे? So the point is that when we have religious attitude, we just follow the bare minimum which is required. Whereas if we have scientific attitude, we try to do more and more and more. इसलिए यदि आस्तिक मानसिकता होगी मेरी धर्म के रूप से तो मैं कम से कम ही नियमों का पालन करके इससे जुड़ा रहूँगा इस मार्ग पे. लेकिन इसके विपरीत यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से मैं इस मार्ग पे रहूँगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पालन करने का प्रयास करूँगा. Therefore, Srila Prabhupada says at least 16 rounds, not 16 rounds, at least 16 rounds every day. प्रभुपाद जी कहते हैं कि कम से कम 16 मालाएं. And actually he said, you have to chant 24 hours a day, not 16 rounds, 24 hours a day. प्रभुपाद जी ने कहा 24 घंटे ही हमें जप करना है. If we understand the science, we try to do more to bring about the desired result. इसलिए यदि मैं इस मार्ग के पीछे, इस भक्ति के पीछे का विज्ञान समझूंगा तो मैं अधिक से अधिक प्रयास करूंगा इसमें अग्रसर होने का. But if we are a member of a religious cult, we just follow the minimum and we expect the miracle at the end of our life.
लेकिन इसके विपरीत यदि मैं आस्तिक रूप से ही केवल इस मार्ग में जुड़ा रहूंगा और कम से कम पालन करके यह अपेक्षा रखूंगा, आशा रखूंगा कि सबसे ज़्यादा बढ़िया फल मिले, तो वो फिर अच्छा नहीं होगा। We do the bare minimum just to somehow or other to consider ourselves Vaishnavas, and then at the end we will go to divine Vrindavan and will serve at the rest of eternity to divine couple in complete, ecstasy. How is that possible? कम से कम चीज़ों का पालन करके किसी न किसी तरह से बस वैष्णव नाम मात्र से यदि मैं बना रहूं और फिर अंत में सोचूं कि गोलोक वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में रहूंगा, ये कैसे संभव है? Our acharyas, they explained with such precision this science. Srila Rupa Goswami explained this in Bhakti Rasamrita Sindhu with such a precision and such a beauty, and we're just following this religious cult and eat pizzas in Mayapur and think that everything will be all right at the end of the life. हमारे आचार्यों ने बड़ी ही कुशलता पूर्वक हमें इस पद्धति का ज्ञान दिया है काफ़ी गहराइयों से, लेकिन हम केवल धर्म के रूप से ही जुड़े रहेंगे इससे, और मायापुर में पिज़्ज़ा ही खा के केवल हम सोचें कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे, तो ये There is no pizzas in the spiritual world. Maybe by now there is, I don't know. But the point I'm trying to make is that when I'm following the science, I understand that responsibility is on me. Whatever I will do, the result will be proportional to what I do and how sincerely I do it. कहने का अभिप्राय ये है कि यदि विज्ञान के रूप से हम भक्ति को देखेंगे और उस मार्ग पे हम पालन करेंगे, तो हम अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे अपने कार्यों के लिए। But if I follow some religion, then responsibility is not mine. लेकिन धर्म के रूप से यदि इस मार्ग का अनुगमन करेंगे, तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। And the responsibility is somebody else. Srila Prabhupada is responsible, my guru is responsible. They will have to save me. I'm doing the bare minimum what I can. The rest is their responsibility. मेरी मानसिकता होगी कि मैं कम से कम पालन कर रहा हूँ इस मार्ग का, लेकिन जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद की है, गुरुदेव की है, या किसी और व्यक्ति की है। The most favorite story about Srila Prabhupada, everyone tells this story, how Srila Prabhupada says, to get to the spiritual world, you have to be 100% pure. बहुत ही पसंदीदा Katha. कथा है कहानी। प्रभुपाद जी की, कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत In Los Angeles, he said, sitting on Vyasasana, to get to the spiritual world, you have to be 100% pure. श्रील प्रभुपाद जी ने व्यासासन से कहा था कि कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति करने के लिए आपको 100% शुद्ध होना होगा। And then he looked at the audience, and the audience was, looking at him with gloomy faces. जब श्रोताओं की ओर देखा तो श्रोतागण बड़े ही अप्रसन्न चेहरे से सुन रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने And then Prabhupada says, okay, 70% pure. तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, 70% शुद्धता से भी प्राप्त हो जाएगा। Sapta Pratisha didn't work either. He said, okay, 50%. उससे भी संतुष्ट नहीं लगे भक्त, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, 50% शुद्धता से काम हो जाएगा। No. And then Prabhupada said, okay, just keep the end of my dhoti, and I will take you through the back door to the spiritual world. श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, और कुछ नहीं तो मेरी धोती के किनारे को पकड़े रहिए, और मैं एक पीछे द्वार से आपको भगवत धाम में। And from now on, everyone is saying, Prabhupada has a special key from the Piche Dwar, and somehow or other we'll get there. तब से फिर बहुत लोग कहने लगे और मानने लगे कि श्रील प्रभुपाद जी के पास एक चाबी है पीछे के द्वार से, जहाँ से वे हमको ले जाएंगे। That's fine. It's Prabhupada's greatness, but it doesn't absolve us from the responsibility to try very sincerely as much as we can. हालांकि ये ठीक है, इसमें इस बात में कोई खराबी नहीं है इस मान्यता में, लेकिन हमारी जिम्मेदारी
इसमें फिर कम हो जाती है। हमें अपने इस मार्ग में आगे बढ़ने की जिम्मेदारी खुद को ज़्यादा लेनी होगी। Because again, we are corrupting the beautiful science of changing the consciousness, of transformation the consciousness, according to the principles of this Vedic science, and we are making it into some mystical cult. क्योंकि फिर हम इस प्रामाणिक शुद्ध कृष्ण भावनामृत चेतना के मार्ग को हम दूषित कर रहे हैं और इसे किसी और एक निम्न आस्था के मार्ग में परिवर्तित कर रहे हैं। I remember some time ago, you probably also remember, 20 years ago, I don't remember when, all Ganeshas started drinking milk. 20 वर्ष पूर्व है, क्या आपको याद हो कि कहीं पे देखा गया कि गणेश की मूर्ति दूध पीने लगी थी? And it has become a big deal, big news. Everyone was picking, and feeding the, Ganesh with milk. ये समाचार बहुत ही प्रस्तुत हो गया था कि गणेश दूध पी रहे हैं। And everyone was so happy, Ganeshas are drinking milk. सब आनंदित हो गए थे कि गणेश दूध पी रहे हैं। And then, Srila Radhanath Maharaj, he told the story that some brahmacharis in Chowpatty temple, they also had Ganesh Murti. So at night, secretly, they went to Ganesh with some milk. परम पूजनीय श्री राधानाथ महाराज जी फिर एक किस्सा बताते हैं कि चौपाटी में मुंबई में कुछ ब्रह्मचारी भी वहाँ के गणेश मूर्ति के पास जाके रात में दूध लेके गए और दूध पिलाने का प्रयास कर रहे थे। But in Chowpatty temple, Ganesh refused to drink the milk. लेकिन वहाँ पे उस जगह पे गणेश जी ने दूध पीना स्वीकार नहीं किया। Because he didn't want to make these cheap miracles. वो ऐसे सस्ते चमत्कार नहीं करना या दिखाना चाह रहे थे। It's a science. Don't make it into some miraculous cult, like Sai Baba or whatever, who creates some miracle. तो ये एक विज्ञान है, इसे कोई और निम्न मार्ग में इसे ले आना ये उपयुक्त नहीं है। That was Srila Prabhupada's approach, and we have to follow him and to maintain the dignity of Krishna consciousness movement. ये श्रील प्रभुपाद जी का तरीका था और हमें इस मार्ग का सम्मान रखना है कि उसी स्तर पे इसे अपनाया जाए। And for that we have to understand very clearly this science was under the proper guidance, with a proper attitude towards this great science. इसलिए ये अच्छे रूप से समझने के लिए हमें ये जो विज्ञान है वो सही रूप में सही मायनों में समझना होगा इसे। And then for sure the result will be there. For sure we will transform ourselves and we will come to the spiritual world. This is the guarantee of our acharyas. और फिर निस्संदेह हमारे आचार्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि फिर हमें भगवत प्राप्ति अवश्य ही होगी। And if the need to take us through the back door will be there, Srila Prabhupada is always there, no problem. और फिर यदि आवश्यकता हुई तो वे हमें पीछे के द्वार से ले जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा But we have to be very honest. I did my best. I did what I could. लेकिन हमें सच्चाई से इस मार्ग का पालन करना है। I got rid of my pride and I got rid of my matsarya, of my envy within the heart. हमें इस अहंकार से इस मत्सरता से ऊपर उठना है। Okay, thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanande. Okay. Have to go. Okay, one or two. One. Okay. Hare Krishna. Maharaj, thank you so much for your enlightening lecture here. मैं हिंदी में प्रश्न पूछूंगा, आप ट्रांसलेट। I will understand. मैं समझता हूँ। तो जैसे महाराज शुरुआत में जैसे आप बता रहे थे कि विनम्रता और निर्मत्सरता होनी चाहिए, ये दो क्वालिफिकेशन। और फिर जैसे आप आगे आपने बताया कि किस प्रकार से जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि जस्ट बेयर मिनिमम जो कुछ भी रिक्वायर्ड है करने के लिए वो मैं कर रहा हूँ और फिर प्रभुपाद और गुरु महाराज की कृपा से मैं भगवत धाम चला जाऊँगा। अगर मैं प्रयास नहीं करूँगा तो नहीं जाऊँगा। अभी
इस जीवात्मा की परिस्थिति यह इस प्रकार से है कि वो कर्ता भाव से उतरने का प्रयास कर रहा है, छोड़ने का प्रयास कर रहा है, जो विनम्रता के मार्ग पर आ रहा है, विनम्रता। लेकिन जब वह इस प्रकार से प्रयास करेगा कि नहीं, मुझे भी प्रयास करना पड़ेगा भगवत धाम जाने के लिए, और जब वह वो प्रयास करता है, चाहे वह साधना में बढ़ने का प्रयास कर रहा हो या फिर पूरा जोर लगा रहा हो कि कैसे मैं भक्ति मार्ग को पूरी तरह से विज्ञान के रूप में अपना के आगे बढ़ूँ, तो उसमें फिर से वह कर्ता भाव आ जा रहा है कि मैं तो इतना साधना कर रहा हूँ, और फिर वो विनम्रता नीचे हो जा रही है। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल है कि अगर मैं साधना अच्छी मेंटेन कर रहा हूँ, रोज़ रीडिंग हियरिंग कर रहा हूँ, तो मुझे अंदर से एक फीलिंग आएगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो वो कर्ता भाव फिर से आ जाएगा और वो विनम्रता कहीं ना कहीं झुक जाएगी। जैसे आप बता रहे थे कि विनम्रता और निर्मत्सरता से अगर आप भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो ये भगवत गीता आपके ईगो का कारण बन जाएगा। तो एक्चुअली यही हो रहा है कि या तो शरणागत होने के लिए प्रयास कर रहा है, अगर शरणागत हो रहा है तो विनम्रता आ रही है, चलो ठीक है, लेकिन अगर वो अपना एंडेवर करने का प्रयास कर रहा है तो विनम्रता कम हो जा रही है और घमंड आ जा रहा है। तो कैसे इसको बैलेंस करें, यह प्रश्न है। Therefore, Srila Prabhupada said that we have to be practicing Krishna consciousness in the society of the devotees. इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें समझाया कि हमें कृष्ण भावनामृत मार्ग का अनुसरण करना है भक्तों के संग में रहकर। This problem that our pride will become Bartan head, that it will increase, is definitely there. ये समस्या तो है ही कि हमारा घमंड, हमारी होशियारी, हमारा मिथ्यांक ये बढ़ता रहता है कई बार। But if we are practicing within the society of devotees, and then especially if we are practicing it within ISKCON, then it will be not such a big problem, because there will always be somebody who will somehow or other put you down. इसीलिए यदि हम इस मार्ग में भक्तों के संग समुदाय समाज में रहे, खासकर ISKCON में रहकर इस मार्ग का पालन करेंगे तो कोई ना कोई रहेगा जो हमें सही स्थल पे दोबारा ले आएगा। I have a little practical anecdote story in this regard. I know one person, he is from Radharaman Goswami families. महाराज जी एक व्यक्तित्व को जानते हैं जो श्री राधा रमन गोस्वामी के परिवार से है। He's not serving the deity, but he is from this family, and he's very knowledgeable, he's very refined from this Goswami background. And all of a sudden he came to Bhakti Rasamrit Maharaj and he started asking, can I take sannyas in ISKCON? I want to take sannyas in ISKCON. भले वे हालांकि वहाँ विग्रह की सेवा नहीं करते, लेकिन उस परिवार से हैं, और एक बार वे आके भक्ति रसामृत महाराज जी से आके पूछने लगे कि क्या मैं आपके ISKCON में आके संन्यास ले सकता हूँ। And Bhakti Rasamrit Maharaj started talking him out. Why do you want to take it in ISKCON? It's so difficult in ISKCON. Don't do it in ISKCON. Don't you know that ISKCON has so many problems? महाराज उन्हें बता रहे थे कि आप ISKCON में क्यों संन्यास लेना चाहते हैं। इस मार्ग या उस स्थल में पहुंचने के लिए कई नियम है, काफ़ी सारा कठिन है, बहुत समस्याएं हैं संघ में। And he said, I know, I'm from Vrindavan, I know all the problems of ISKCON and I know all the problems of other groups which are there. उन व्यक्तित्व ने उत्तर दिया कि मैं सब जानता हूँ, मैं वृंदावन से हूँ, मैं जानता हूँ ISKCON में कुछ समस्या है तो कौन सी है, और संघों में भी समस्या है, मैं सब कुछ जानता हूँ, अनजान नहीं हूँ। But the reason why I want to take sannyas in ISKCON is because if you take sannyas in ISKCON, you will never imagine yourself to be the, self-effulgent acharya. You will remain humble. लेकिन उनका कारण ये था, सोच ये थी, विचार ये था ISKCON में संन्यास लेने का जो अभिप्राय था कि यदि मैं ISKCON में संन्यास लूँ तो मेरी मानसिकता ऐसे नहीं रहेगी कि मैं कोई संघ का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य व्यक्तित्व हूँ, सबसे बड़ा हूँ, सबसे अहम हूँ। मैं हमेशा विनम्र बना रहूँगा भक्तों के सामने। So, therefore, Krishnadas Kaviraj Goswami says that
the society of devotees is like the protecting fence against our creeper of devotion. इसलिए श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि ये भक्तों का जो संघ है, समुदाय है, ये हमारी सुरक्षा करता है. Yeah, so we have to definitely try, and obviously our ahankara or kartabhav, as you said, will increase. But if we do it in the society of devotees, where we always have somebody who is more senior than us, then we will still be safe, and that the balance will be naturally found if we remain in this society, in this sangha. तो भले ही कर्ता भाव बढ़ने की संभावना कभी-कभी आ जाएगी, लेकिन यदि हम भक्तों के संग में रहकर भक्ति करेंगे, कोई वरिष्ठों के अंतर्गत रहकर विनम्र रूप से, तो हम अपने घर पे आज विनम्र रूप से. And devotees are the best psychologists. और भक्त जो है वे बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट, चिकित्सक हैं. And they will always tell you, you have a problem in your heart. वैसे एक्सपर्ट मानसिक चिकित्सक हैं, वो बता देंगे हमारे हृदय में क्या समस्या है, क्या रोग है. They will read your mind before you know it. पता चले इससे पहले वे हमारी बात समझ जाएंगे और हमें मान